Recording. Hello, dear students. Our today's topic is over here buyback of shares. You must understand first of all what is meant by buyback of shares. See, there are two different words. One is buy, and there is back. Buy means purchase, and back means return. Listen, buy means purchase, back means return. Means we'll mix these two words. Means repurchase. Now, what is meant by repurchase? Only repurchase is possible when you have sold in previous years or any time. See, when any company start and after starting and after certain period of time, when they want to go for the expansion, definitely they require more fund, and they may have two different choices for raising the fund. One may be debt. They can borrow fund from various sources. It may be from banks, it may be from general public, anywhere. But there are many chances of risk, like fixed rate of interest, and if any company will go in loss, then definitely there may be problem of the payment of interest or anything. At that time, a company issue equity shares and they raise the fund, and after certain period of time, it may happen that the company have sufficient, or we can say more than required reserve, a huge amount of reserve. In that condition, company go for the buyback of shares. And question mark, which company go for buyback of the shares? Simple, the company who have sound financial condition. If they will not have sound financial condition, how they will go for the buyback? And there may be many other reasons also, but not there is only one thing. Because if company have more than sufficient reserve, rather than investing somewhere else, they can also buy back their own shares, right? So if you can see over here, when a company purchases back its equity share from its existing shareholders to whom it was sold earlier, is known as buyback of equity shares. Means they have sold in earlier time and now they want to purchase it return. In short, repurchase the shares. So this is known as buyback. Now, one more thing is very much necessary to understand from your side. You cannot forcefully say to the shareholder ki you return back our share, because they are also the owner of the company. Even if they have purchased only one share, then still they are the owner of the company. Even they may have crores of share, they are also the owner. But that person is also owner of the company. You cannot order him that you return back our shares. No, because the company is also his property. Maybe 1%, maybe 0.00001%, anything. So you cannot forcefully say. So how company do the they offer normally premium price. What is premium price? Premium price means higher price. Assume that if the market price is going on 1,000, they will offer to them, we are ready to give you 1,100, 1,200. Definitely the people are greedy. They want to earn. They want to accumulate more money. So definitely they will return back the shares. So buyback of shares is the repurchase of own shares from the existing equity shareholder by the company. Now the question mark may be there. What are the objective behind buyback of shares? क्वेश्चन मार्क, क्यों भाई बायबैक हम करते क्यों हैं? ठीक है ना, मार्केट में शेयर पड़ा है, पड़े रहने दो, क्यों वापिस से आके उनसे खरीद के उनको पैसा दिया जाए अपने ही शेयर होल्डर को? सबसे पहला फायदा ये होता है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है. देखो, शेयर होल्डर्स कौन होता है? शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी. आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मान लीजिए एक कंपनी है, दे आर अर्निंग 100 rupees, right? And they have 100 shares in the market. Means everybody will get 1 rupees. Leave it the shares. चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, वहां से कुछ रेंट आता है, और वहां मान लो 3 भाई, एंड रेंट आता है मंथली 30,000 रुपीज. तो 3 भाई हैं, दे विल डिस्ट्रीब्यूट एमंग देयर सेल्फ. एवरी ब्रदर विल गेट 10,000 monthly. But assume that these two brothers remove another brother, third brother, by giving him
some amount or something and purchase his shares, हिस्सेदारी उनका अगर खरीद लें, तो what will happen ultimately what will happen over there, that the shareholders number of shareholders will reduce. From the next month onward they will get 15,000 out of the rent. उनको रेंट का कितना मिलेगा, 15,000 रुपए मिलना चालू हो जाएगा. रीजन इज देयर क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ द ओनर हैव बीन रिड्यूस. सिमिलरली इन द कंपनी आल्सो, if number of shareholder will be more, definitely per share earning per share or per share earning will be less. So first benefit, first objective is over there to reduce the earning, sorry, to increase, not reduce, to increase the earning per share. Second one is there, reduce excess share capital. Sometime it may happen due to lack of forecasting, due to lack of any reason, we raised more profit, we raised more profit, sorry, no, more capital from the market, which was not required. Assume that we required only 10 crore and we have raised 20 crore from the market, then why unnecessary this 10 crore we have to keep with us? What do you do? We return excess money by the way of buyback of equity shares. There may be third reason, that is use surplus cash lying idle in the business. Surplus in the sense I have said that reserve, जो पैसा हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, अल्टीमेटली उस पैसे का कुछ हमें करना तो है नहीं. तो व्हाट वी कैन डू, डेफिनेटली वी कैन यूज दिस दैट कैपिटल, दैट कैश, by buyback of our own equity shares. Next, to increase the shareholding by of the promoter of present management. ध्यान देना, present management जो भी हमारे हैं, assume that they have less number of shares, they can buy back the shares now and they can increase their shareholdings in the company, and definitely if their shareholding will increase, their control over the company will also increase. Next one is that to prevent takeover attempt of the competitor. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसके थ्रू क्या होता है, अगर कोई भी कॉम्पिटिटर हमारी कंपनी टेक ओवर करने की कोशिश करता है, बाय बैक के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं. कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो तो वहां पे कुछ ऐसा डिटेक्ट करता है, वायरस इज डिटेक्टेड, तो आप क्या करते हैं, एंटीवायरस का यूज करके आप उसे रोक देते हैं. सिमिलरली दिस competitor may work like the viruses. Slowly and gradually they will spoil your position in the business and they will take control, they will hack your business, not online, not through internet, through the control, through the shareholding, through the ownership pattern. They can hack you. Your position will be reduced in the company. Ultimately you will finish and they will take over your company. How? First of all, you must know that who have the 51% shareholding, they are called as the real, they will be the real owner. Actually, all equity shareholders are the real owner. There is no any doubt. But the control, actual control will be in the hand of the people who will have 51% shareholding. And assume that any company there who have only 35% shares and 65% share are in the market, and assume that on that company some competitor have or some competitor want to take over that, some competitor want to capture that company. Ultimately what will happen, they will try to, not only try, they will start to buy the share from the market. Slowly and gradually they purchase a 10% share in 1 month, in another month 10%, 10%, 10%. Slowly and gradually, when they will take over 51% share even from the market. There was 65%, they have taken only 51, 52% share in the market. They will openly announce that I have 51% share. Okay, fine. Take the extraordinary general meeting, take the meetings, and they will appoint their own chairperson, they will appoint their own things, and ultimately control will go in those people, those competitor. Ultimately your position will be finished over there. You will be only a normal stakeholder because they have the 51% share in your company, in your business. So make it very much clear. If you have some doubt that somebody is trying to do such things, such activities, then what you can do? You purchase only 16% share. Na? You have only already 35%. Say purchase only 16% share from the market through the buyback. Halaki there are also some limit of buyback. Definitely you cannot buy back any number of shares. But
You can purchase some shares, and definitely it will comes under your control. Nobody can do, nobody will be able to take over your business. So next objective is there to prevent takeover. You can stop your takeover of the competitor. Okay. Next, to effect financial restructuring or compromise or arrangement or amalgamation. In such conditions, also buyback may take place if you want to do any restructuring, any compromises are going on, like any merger amalgamation, like Vodafone Idea have merged, you know that. So if there are any things like this is going on and situation demands, then also buyback can take place. So these are some objectives. Again, listen, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, एक्सेस कैपिटल जो है वह क्या होता है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यूज हो जाता है, अन्य से फालतू में पड़ा हुआ उससे बड़ा यूज हो रहा है। आइडल सरप्लस कैश जो है वो यूज हो जाता है। नेक्स्ट, हमारे शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर्स है उनका प्रेजेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज हो जाता है। टेक ओवर कोई करना चाहता है, वी कैन स्टॉप देम। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उस समय भी ऐसी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज देयर बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स होता है? पहला, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली। अज्यूम दैट बिगिनिंग में हमने कुछ गलतियां कर दी थी, कुछ ज्यादा पैसा हमने शेयर से उठा लिया था, हमें डिवेंचर्स उठाना था वगैरह वगैरह, वी कैन रीऑर्गेनाइज। जो पिछली गलतियां हो गई हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुधार सकते हैं। सेकेंड थिंग इज देयर रिटर्न ऑन कैपिटल या नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग पर शेयर हमारा क्या होता है, इंप्रूव होता है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। रिमेनिंग शेयर होल्डर्स विल बी हैप्पी डेफिनेट। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, तीन भाई थे, एक को हमने रिमूव कर दिया ना, जो बचे दो भाई हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और उनका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले उनको थर्ड पार्ट उनका वो रूम में या फ्लैट में था, अभी उनका टू पार्ट मतलब हाफ हाफ पार्ट हो जाएगा। तो उनका जो वैल्यूएशन, जो नेटवर्थ है और जो उनका अर्निंग होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स होंगे दे विल बी वेरी मच हैप्पी। रीजन इज देयर their dividend will increase, their market value will increase, their net worth value will increase, their we can say that ki actual shareholding proportionate, I'm saying proportionate, will increase. Next, existing promoter and manager keep their control. As I have said that if you buy back, assume that you have only 35% shares, you have less control. If you buy back 16% share, definitely you will have 51% shareholding and you will have much more control over the company. Next, existing business plan and policy can be continued without outside interference. Definitely outside will not be able to interfere in your business, because if any outsider will take over your business, they will interfere in your plan and policies, and maybe they will spoil your business. It is also possibility over there. So through buyback, you can stop to outsider to interfere in your business. You can get out them. You get out, because you have the control. You have the more than 51% share. So definitely they cannot interfere in your business. Next, investor can sell back the shares to the company normally at the higher price than the market price. Many time investor also want to get some money. They also want to get profit. Then they have the option to resell their share higher than the market price. Assume that I have Infosys shares and the market price is 2000 and company is offering me 2200. Definitely I will be happy and I will return them. Okay, take it. Simple. Next, encourage equity investment in family run small business. Buyback enable the family to keep control and investor liquidate their fund. Assume that there are some families who are running the businesses and they want to increase their family control over the business, they can buy back it. Their family control will increase definitely. And at the same time, investors also want to liquidate. They want their cash back. So family will return them money, and investors are also happy because they are getting cash. Next, health family arrangement, partition, etc. Either claim dissatisfied member can be settled if there will be any partition, like as you know, Reliance, Mukesh Ambani and Anil Ambani. There may be partition like that, and in such a condition, you can assume that investors are not satisfied. They are saying that okay, I don't want to go with this promoter. I don't want to go with this people. Okay, fine. We are offering you buyback. You return back our shares. You go Tata bye bye. We are also not interested to be with you.
No problem. Na. You buy, you take chance in buyback, and we'll finish. Next, enables the company to buy out discontented shareholders or employees shareholding when the employees employment ceases. Assume that there are ESOS, employee stock option scheme. We give shares to the employees also. When company brings IPO and FPO, sometime company also keep some part of the shares for the employees also. Even ESOS is also different concept. There are some promises given to them at the time of appointment. There is different concept, but through buyback you can also release to your employees. You can take back their shares and you can refund them money. Okay, ठीक है, आपको हमारी कंपनी में काम नहीं करना, टेंशन मत, तो आप शेयर भी हमारा दे दो, पैसा ले लो, अपने घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. Functional, next one is there. Come on the 10th point. Functional shareholding. Just wait a minute. Functional shareholding and odd lot can be avoided. It's a very simple. Odd lots you can avoid it. See, again we are going in that benefits. Just wait. Fine. First, share capital can be reorganized. Return on capital, net profit or earning per share, I can say that increased. Remaining shareholders will be happy. Definitely, they will get more profit, more net worth, more dividend, everything. Existing promoter can raise their control, can improve their control because the number of shares or as well as shareholders have been reduced. Existing business plan and policies can be continued without outside interference. Definitely takeover you can, you will remove takeover, chances of takeover even. Investors can sell back. Definitely want to get their money. They want to liquidate their shares. They can get back their money. And as I have said, that family run type of business, they can also increase their family control and helps to family for rearrangement like partition or anything, and help the company to out discontented shareholder or employees who want to cease their employment or anything. So there are the something like this. Next one is there. When you are talking about benefits of the buyback, definitely, definitely there are also some drawbacks. It's not always. Remember one thing very much clear. If there are some benefit already, always there are some drawbacks also. Buyback may help. Definitely, promoters can increase their personal investment in the company, and they can also take the undue advantage of that. Maybe chances, maybe they want to take complete control of the business in their own hand. Halaki, there are some guidelines regarding the same, that more than 75% of the holding cannot be in the hand of promoter like this, but up to certain extent they can take undue advantage. Next, buyback may lead to the manipulation in share price. Through buyback, they can manipulate. Manipulate means up down करना, price कम ज़्यादा करना. They can also manipulate the share price. Money used for buyback could have been used for the productive investment. देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपना ही शेयर बाईबैक करने का क्या सेंस बनता है. उससे बेटर है कि आप उस बिजनेस में को आगे बढ़ाने के लिए पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, बिजनेस आगे बढ़ेगा. वाई आर परचेसिंग योर ओन शेयर्स अगेन. तो ये जो पैसा जो कहीं अच्छे वापस से प्रोडक्टिव यूज के लिए हो सकता था काम, वो अननेसेसरी हम क्या करते हैं, बाईबैक में यूज करते हैं. तो दीज आर द सम benefits as well as advantage drawbacks of the buyback of the shares. Now at the same time we must also know that what are the steps in buyback of shares. So let's come on the further concept. What are the various steps of buyback of the shares? Just wait a minute. Fine. So first of all, when you talk about steps, definitely if there will be any investment sold or anything, remember it, that is not related to your buyback, that is general normal entry like 11th or 12th. Assume that if you are going to sell assets, right, there will be very simple entry or any asset investment, anything, bank account debit to investment account. And there may be chances you are selling at higher price or lower price. You can see over here in the example. Assume that there are the asset
which value, or investment which value is 1 lakh, and you are going to sell at 1 lakh 30,000, definitely you will receive 130 debit what comes in, and investment goes out. Investment credit 1 lakh and 30,000 difference is your profit. Definitely it will be in the credit side. Automatic by default it will be in the credit side, no doubt. Similarly, if we'll say that sir agar hum log less price pe beche to, similarly the entry will be there. Cash bank account debit 70,000 and investment will go for 1 lakh. Simple. Value of the investment was 1 lakh. Then difference will be in the debit. Simple. Debit all expenses and losses. Next one is there. That was unrelated entry. I can say that. Now here it will start from due. 3 steps: due, arrangement, payment. Due, arrangement, and payment. When you go for due, in case of due, you can do due on par, premium, and discount. Mostly it is normally on par as well as premium. Discount is not an actual or real concept, because definitely nobody will give return back their shares on discount. So normally par and premium. Par means जितने का उतरे. तो हमने क्या किया बेटा, इक्विटी शेयर लिया. डेबिट व्हाट कम्स, रिटर्न हमने मार्केट से बोला भाई हमारा इक्विटी शेयर हमें वापस कर दो. डेबिट व्हाट कम्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया, जो भी हमारे शेयर होल्डर थे, रमेश, सुरेश, दिनेश, वट एवर इत्यादि, तो दे आर equity shareholders. So equity share capital account debit to equity shareholder account. Actually, they are the personal account and they are the giver. So entry will be there: equity share capital account debit to equity shareholder account. Simple. Next one is there. If you are going on premium, definitely equity share capital account debit, and you are giving more money. Assume that you are giving more money. You can see in the example, if you see the slides, definitely it will be very helpful. If you are giving more money, then what will happen? It will be loss for you. Premium on buyback of share account debit, because this is loss, to equity shareholder account. To equity shareholder account, you can see over here. Just wait a minute. In the example also you can see. Fine. You can see over here. Equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity shareholder account. Fine. Similarly, you can see the next example also. Now, this is your due entry. After that, at discount, you can see it, but the chances will be very rarest. Equity share capital account debit. 2. We have given them equity share equity share capital account debit. Who have given the shares? Definitely equity shareholder. So equity shareholder account credit, and we are pursuing at discount. Definitely we are in the benefit. So that will be in the credit side, capital reserve. You can see 2 examples. Now third step, अरेंजमेंट. अब उस पैसे का अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे? देखो, बहुत सिंपल सी बात है. अरेंजमेंट आप 2 जगहों से कर सकते हो. एक तो अपने फ्री रिजर्व से, और दूसरा दूसरा अपने न्यू शेयर से. कोई नया शेयर इश्यू करके भी आप बाईबैक कर सकते हैं. तो सबसे पहला, अगर आप प्रीमियम को अरेंज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दूसरा मेथड है एक्चुअली. यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और बाईबैक. मैक्स ज्यादातर ऐसी ही एंट्री होती है. यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड में डिफरेंस है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और बाईबैक अकाउंट. जो प्रीमियम रहेगा पहले उसको अरेंज कर लो, अगर प्रीमियम पे बाईबैक होता है तो. अगर प्रीमियम पे बाईबैक नहीं होता है तो कोई टेंशन है नहीं, प्रीमियम की एंट्री कोई आएगी नहीं. नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सीआरआर से एडजस्ट करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. ये देखिए साइड में, राइट साइड में. अगर आप फ्री रिजर्व से अरेंज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, टू सीआरआर. इसको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल डम्सन रिजर्व में जानना पड़ेगा. नेक्स्ट, इफ यू सी ओवर द लेफ्ट साइड, आप नया शेयर भी इशू कर सकते हैं. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप चाहे इक्विटी शेयर इशू करके यूज करें चाहे प्रेफरेंस शेयर. और प्रीमियम तो जो है वैसा ही सिस्टम रहेगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, लास्ट एंट्री इज देयर, दैट इज योर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. आप क्या करेंगे? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या करेंगे? सॉरी, एग्जिस्टिंग नहीं, जिसका आप बाईबैक ऑलरेडी कर रहे हैं,
आप उसको क्या करेंगे, पैसा देके उसको भगा देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बिकॉज दे विल बी रिसीवर, यू आर गिविंग देम मनी, ये ले भाई पैसा ले, तो दे विल बी द रिसीवर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आपने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गया, डेबिट हो गया, और आपने क्या दिया, पैसा दिया ना, मनी इज द रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपके पास से पैसा गया है तो किस साइड से जाएगा, क्रेडिट साइड से जाएगा, तो इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे एंड अल्टीमेटली योर कैश बैंक अकाउंट विल बी credited. Okay, now if you'll go for the bonus share, assume that if you go for the bonus share, now what is bonus share? First of all, you must know that bonus share is the share given to the existing shareholder at free of cost. And one more thing, this share are fully paid up, means they will not call any money for that shares. बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दिया जाता है और उसके बदले कोई भी पैसा लिया जाता नहीं है। तो ऐसे केस में जितना भी शेयर्स उनको देना है तो सबसे पहले आप उसको इस्तेमाल करेंगे सीआरआर, अभी जो हमने सीआरआर ऊपर जो हमने क्रिएट किया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर वहां से कोई शॉर्टेज होता है, सीआरआर सफिशिएंट नहीं है जितना आपको चाहिए, देन यू कैन यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू कैन यूज जनरल रिजर्व अकाउंट। तो यू कैन ऑल्सो यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू कैन ऑल्सो यूज जनरल रिजर्व अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट जो भी है, डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। आप बोलेंगे सर इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट में क्यों, क्या गिवर है, नहीं, ये लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में, हमने लाइबिलिटी जनरेट किया ना, हमने उसे बोला कि भाई हम तुम्हें शेयर देंगे बोनस, तो अगर हमने उनको प्रॉमिस कर दिया है तो हमें देना है, दैट इज लायबिलिटी फॉर अस, पहला रीजन। सेकंड थिंग, आपका क्वेश्चन आएगा सर इक्विटी शेयर होल्डर ही लिखते हैं ना, बोनस टू क्यों लिखते हैं? बेटा वो दिखना चाहिए कि हम उनको फ्री में दे रहे हैं। रीजन इज देयर, क्योंकि बोनस शेयर जो होते हैं उस पे उनको करंट ईयर के लिए डिविडेंड वगैरह मिलने वाला नहीं, तो यह शो करने के लिए भाई ये बोनस शेयर है, जिसे हम दिखाते हैं बोनस टू। और याद रखना करंट शेयर करंट ईयर के लिए मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से डिविडेंड उनको मिलता है। तो मेक इट वेरी मच क्लियर, फॉर द करंट वर्किंग ईयर दे विल नॉट गेट दैट। इट्स नॉट मीन कि इक्विटी शेयर होल्डर के जो बोनस मिलता है उनको उनका कोई राइट्स नहीं होता, नहीं, राइट्स उतना ही होता है जो उनका नॉर्मल शेयर का राइट होता है। उसके बाद अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उनको बोनस शेयर इशू कर देते हैं, रिवर्स एंट्री हो जाता है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बिकॉज दे आर द रिसीवर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने उनको क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया है। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बेटा गलती यहाँ पर ऐसा करते हैं कि वो लिखते हैं कैश में, क्योंकि उनको क्या होता है हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया। हम बोनस में इक्विटी शेयर होल्डर को कभी पैसा नहीं देते। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस, हम बोनस में इक्विटी शेयर होल्डर को कभी पैसा नहीं देते, हम उनको नया शेयर्स देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, बोनस में कभी भी कैश बैंक क्रेडिट होने वाला नहीं है। सो एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग ओवर हियर नाउ, यू कैन आस्क मी। नो, फाइन, ठीक है। तो अगेन एक बार छोटा सा मैं आपको रिकैप पूरा बात कर लूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात मेरी आज हुई, अपनी बात हुई बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब हम अपना शेयर खुद से रिटर्न बैक खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई बैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं, पहली बात। अब बाई बैक ऑफ शेयर्स हम करते क्यों है, हमारी बातें हो चुकी हैं। बाई बैक ऑफ शेयर्स हम लोग नॉर्मली अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, कोई अगर हमें अटेम्प्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है हमारी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए, या अपने कंपनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ाने के लिए, या शेयर होल्डर्स या जो भी पीपल हैं, जो पुराने जो प्रमोटर्स हैं, दे वांट टू देयर इंक्रीज देयर होल्डिंग, फॉर दैट पर्पस, ये सारे कारण होते हैं बाई बैक करने। तो एट द सेम टाइम ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ बेनिफिट्स इसी तरीके से होते हैं, और एट द सेम टाइम कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रादर देन यूजिंग द मनी फॉर द बाईबैक, they can invest that money for the business and for that expansion, and definitely that will be very helpful for the business। तो उसी तरीके से कुछ आपके वहाँ पे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सिमिलरली जब हम बात कर रहे थे स्टेप्स की, तो नॉर्मली आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह सेल करना, यू कैन डू इट, एसेट सेल करना, यू कैन डू इट, बट इसका ज्यादा बाई बैक से कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, यू कैन यूज फॉर बाई बैक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर बेसिकली थ्री important steps: due, arrangement, payment। आई एम सेइंग दैट अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का सेल वगैरह का, उसके अलावा ड्यू मीन्स कितना हमें पेमेंट करना है, अरेंजमेंट उस पेमेंट का हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, और पेमेंट
अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उनको पेमेंट करके मैटर खत्म कर देंगे। अगेन ड्यू आपका पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, रेरेस्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट की बात फिलहाल मैं नहीं करूंगा। पार मीन्स जितना है उतने पे, 10 वाला शेयर से 10 पे बाई बैक कर रहा है, दिस इज पार, जो कि ज्यादातर होता नहीं है। ज्यादातर शेयर्स प्रीमियम पे ही बाई बैक होते हैं। प्रीमियम मतलब जो रेट चल रहा है उसका फेस वैल्यू उससे ज्यादा पे जितना हम पेमेंट उनको करते हैं, दैट इज नोन एज प्रीमियम। अज्यूम दैट 10 वाला शेयर है, हम उनको 20 देने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज प्रीमियम। 10 वाला शेयर से 10 ही देने के लिए तैयार, दैट इज पार। ये हो गया आपका ये हो गया आपका ड्यू। अरेंजमेंट की बात जब हम लोग करते हैं, अरेंजमेंट दो जगहों से हम कर सकते हैं। एक फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, उससे क्या करते हैं हम सीआरआर क्रिएट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग इसके अलावा नया शेयर भी इश्यू कर सकते हैं। इट्स लाइक इसकी टोपी उसके सर, नया शेयर इश्यू किया और उसका इस्तेमाल क्या कर लिया, पुराना शेयर बाईबैक करने के लिए कर लिया, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उनको पेमेंट करके मैटर खत्म करते हैं। पेमेंट करके मैटर खत्म करना मतलब उनको पैसा दे दिया, क्या हो जाएगा, उनका कैश बैंक, सॉरी हमारे पास से कैश बैंक गया, रियल अकाउंट का फॉर्म किसको दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, इक्विटी शेयर होल्डर विद द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश बैंक गया है, तो टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हमारा पूरा पूरा मैटर खत्म होता है। हाँ, अब यहाँ तक बातें हो गई, तो थोड़ा सा एक बार मैं वापस से रिमाइंड कर दूं, आप सभी को गोल्डन रूल्स याद होना चाहिए। गोल्डन रूल्स क्या है, सबको पता है, तीन टाइप्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनी, इट मे बी एनी नेम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आल्सो मे बी, डेटा क्रेडिटर्स आल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। कोई भी नाम हो गया, कोई पर्सन, नेचुरल पर्सन लाइक रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक रिलायंस, टाटा, आर्टिफिशियल पर्सन, तो एनी पर्सन। सेकेंड चीज, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट एनी आर्टिकल और थिंग्स, कोई भी सामान, इट विल कम्स अंडर द रियल अकाउंट। Nominal account, any expenses, losses, income, gains. All these comes under the nominal account. Now, when I talk about the personal account, the rule is debit the receiver, credit the giver. When you talk about the real account, debit what comes in, credit what goes out. When you talk about nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. Fine. So thank you very much to all of you. Bye bye. All the best.